Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got the following content of list and topics. So let's discuss. The first topic says about an app to capture data on groundwater. ठीक है, तो जब हम लोग ग्राउंड वाटर के बारे में बोलते हैं, ठीक है, so groundwater is a very important requirement today we have in every countries. It's a basic necessity today. Okay, if today I go with the groundwater system of our country, a recent analysis of the Central Groundwater Board indicates that about 33% of the wells monitored have registered decline in groundwater levels in the range of around 0 to 2 meters. And moreover, a decline of more than 4 meters has also been observed in some of the few pockets of metro cities. And that metro cities can be named as New Delhi, Chennai, Indore, Madurai, Vijayawada, etc. Okay. And CGWB, that is the Central Groundwater Board, periodically monitors these groundwater levels throughout the country, including every metro cities in various regional scale. So we know that the contribution of groundwater to national gross domestic product is never measured, and which is an important requirement because states of India is the largest extractor of groundwater in the world. Some of the major states like UP, Bihar. So these are the major extractors of the groundwater. Okay. So in now, what is currently in news? The Rural Development Ministry recently developed an app which is known as Jaldut. And this app was launched by Minister of State of Panchayati Raj, who is Kapil Moreshwar Patil, and also some of his associates. So extraction of groundwater as also utilization of surface water sources has reached some of the critical levels in several parts of the country, and which results in some of the significant depletion of water levels. And the action is causing agony to the communities, including even the farmers. And therefore, the measurements as well as observation of the levels of water table across the country have become essential. तो आज हम लोग अगर मेजरमेंट करके नहीं रखते कि कितना डिप्लीट हुआ है, कितना बाकी है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए काम आएंगे नहीं इतना लेवल पे, तो आज अगर हम लोग कुछ काम नहीं करते इसके ऊपर, then obviously in the coming times there will be no groundwater. People will face the scarcity of groundwater. So today if I say about the importance and significance of this app, तो ये app क्या काम कर सकता है? See, this app is launched to capture the water level of the selected wells in the village across the country. जितने भी villages में हम लोग का wells है, तो इसका water level capture करेंगे ये. Also, this app will allow the Gram Rojgar Sahayak to measure the water level, and that is twice a year, pre-monsoon and post-monsoon. तो इन लोग का क्या होगा? Opportunities मिलेंगे इन लोग को. Also, if I see about the adequate number of measurement locations, we need to have choose some of the representatives from the every village so that they could tackle the manage of this groundwater level. Also, if we use this app, also if you give some of the responsibilities to some of the local level of governments, be it the panchayats, who can provide some of the robust information and better planning of works. Also, this groundwater data can be utilized as a part of Gram Panchayat development program, and even in some of the planning exercises of this MG Narega, so that this groundwater reports can be very used or utilized for research purpose as well as various other purpose which can uplift a which can uplift a society of the rural people who are living in those areas facing a crisis of the groundwater in the near time. So today the country has taken several steps for the improvement of the water management both in the rural and the urban areas. So these measures needs to be taken because if we are not going for a watershed development, if you are not going for afforestation, if you are not going for renovation, if you are not going for harvesting,
the level of groundwater will be in a critical stage in the coming times. So thus this app will help in measuring and observing the water levels for better improvements. तो यहाँ पे देख सकते हो top 3 major states where personal water levels in well increased, and ये bottom 3 major states where that it is dipping, that is पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में critical situation दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे थोड़ा हम लोग को improvement मिला है. ठीक है. So as compared to this states, we can see these states are very much of far enough in some economical terms also. तो यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को डिक्रीज देखने को मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे यही सब बात अबाउट द ग्राउंड वाटर डिस्कस किया गया है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक्ड फॉर हेट स्पीच. ओके. तो यहाँ पे हेट स्पीच के लिए बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं, तो ये सब जो यूट्यूब चैनल्स थे उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है. ठीक है. तो ये जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच का मतलब क्या होता है? What is the definition of this hate speech? So if I see in general terms, it refers to the words whose intent is to create hatred towards a particular group, and that group may be a community, religion, or race. And this speech, which has been categorized as hate speech, may or may not have meaning, but is likely to result in violence. So therefore, the hate speech is one of the greatest challenges today the country is facing. और ये मेजर रीजंस ऑफ हेट स्पीच क्या होता है हम लोग का? फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी. ओके. स्टबबॉर्न ideologies of people. Also, we could see that there are various legal provisions of hate speech which are very much of undermined. Though we have got representation with respect to legal changes. Supposedly IPC ka 153A, 153B. This says about the punishment that cause enmity and hatred between two groups. Section 295A, which deals with punishing acts with deliberately or malicious intentions. Section 505 and 505, 1 or 2, which says about publication and circulation of content. किस तरह हम लोग को स्टॉप किया जाएगा उस सब. उसके बाद जो रोपा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वहां पे बोला गया है कि हाउ पीपल्स मस्ट बी और हाउ अ पर्सन मस्ट बी कन्विक्टेड ऑफ द इलीगल यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शंस. तो ये सब हम लोग का डिस्कशंस होता है. तो आज इन्हीं सब के लिए वी कैन सी दैट यहाँ पे जो चैनल्स है उसको ब्लॉक किया गया है, बिकॉज यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर सेइंग समथिंग अबाउट रिलीजियस कम्युनिटी एंड स्प्रेडिंग कम्युनल डिसहार्मनी. ओके. सो न्यू आईटी रूल्स में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिया गया है कि हाउ वी कुड डायरेक्टली कंट्रोल दिस होल मैनस ऑफ गोइंग फॉर द पीपल एसोसिएटेड विथ द हेट स्पीचेस. ओके. तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है अबाउट द हेट स्पीचेस. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. Carl Gustav M4 to be produced in India. Okay. So in this scenario, we could directly see about that जो Swedish defense major SAAB on Tuesday announced plan to manufacture its M4 weapon system. The manufacturing would be done by the newly fully SAAB owned subsidiary CSAP FFB India Private Limited. तो ये जो कार गुस्ताव है, it's the name of an Indian military super gun that is a combination of the recoilless rifle and a rocket launcher. तो ये हम लोग अभी तो हम लोग M4 एक जो देख सकते हो यहाँ पे, this is M4 which is practically been used in the Indian Army today. Okay. तो ये recoilless rifle है, and this beast built in Sweden fires a hefty 84 millimeter round. सोच सकते हो. And it takes out light enemy tanks, people carriers with thin armor and bunkers. So today, these things, that is this Carl Gustav M4, इनका ऑफिशियल नाम बहुत बड़ा सा था पहले. तो द ऑफिशियल नेम इज समवट वेरी लॉन्ग, and it's known as M3E1 Carl Gustav multi-role anti-armor और anti-personnel weapon system. तो इनको बोलते हैं हम लोग MAAWS. MAAWS, that is multi-role anti-armor और anti-personnel weapon system in technical documentation. So ये जो गुस्ताव है was modeled after the well-known bazooka of World War II.
याद रहेगा तुम लोग का, बाजूका बहुत यूज होता था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसके बाद ही बनाया गया था इसको. सो दिस सिस्टम ऑफ कार टुडे इवन यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा इक्विपमेंट है, इजी टू मेंटेन है, वाइड रेंज ऑफ एमओ है, लॉन्गर लाइफ है, स्टर्डीनेस है, और बहुत सारा एडवांटेजेस है. सो ये इंडियन आर्मी ने बहुत सारा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में यूज किया है in various number of combats for decades. And today, this Carl Gustav proved to be a formidable opponent for transporting even trucks, bunkers, and tanks. So today, this equipment, तो ये आज हम लोग का बनाया जाना है, ठीक है. तो द आर्मी हैज बीन यूजिंग, मैंने जो बोला, MK2 एंड MK3 वर्जन अभी यूज कर रहे हैं सिंस 1976. ओके. एंड टुडे यू कुड सी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इज प्लान टू इंक्लूड द M4 वेपन. तो ये बहुत प्रिसाइज वेपन होता है. The key technologies such as carbon fire, winding for M3 and M4 brand, fire control device, तो ये सब क्या है? This is the first time the company will be setting up a manufacturing facility outside Sweden. And the new facility would be partnering with Indian sub-suppliers, which will fulfill the Make in India requirements and will also generate jobs. तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसका जो अभी सेटअप होंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इट विल बी आउटसाइड स्वीडन एंड इट विल बी बिल्ड इन इंडिया. So it will also give a boost to the Build in Made in India campaign and also give a boost to various number of exports that India is directly planning, that is related to defense export in the near future. ठीक है. तो ये गन्स जो अभी यूज में है, ये हम लोग बनाएंगे विथ, अभी फिलहाल हम लोग का लॉकर लॉन्चर्स के बेसिस पे है, तो अभी इसको हम लोग गन्स के हिसाब से बनाएंगे. ठीक है. विच कुड बी वेरी मच यूजफुल फॉर अस टू गो फॉर वेरियस नंबर ऑफ कम्बैट एक्सरसाइजेस और इन ऑल्सो सम ऑफ द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. Job grews in the final quarter. तो अभी क्या हो रहा है? We can see that slowly and slowly we managed tightly in our economy, and because of this various number of appreciations or various number of fiscal policies that has been taken by the RBI and even by the respective agencies, today we could see that in the country there has been a rise of around 38.5% of the workers who are directly employed in the final quarter. ठीक है. And we know that this education, manufacturing, trade and finance services, which today accounted for around 84% of the total estimated units, manufacturing sector ही contribute करते हैं around 38.5% of the workers. Okay. And in this period we could directly say about that यहाँ पे जो jobs है ये totally in the final quarter rise हो गया है. ठीक है. देख सकते हो यहाँ से overall employment in crores, and this is the quarters. So you could see the first quarter, the second quarter, third quarter, the fourth quarter mein we could see about it has been rise to around 3.18%. Okay. So यहाँ पे we have also seen the participation of women workers witnessed a marginal increase of around 31.6% in the third quarter to 31.8% in the fourth quarter. So this has been estimated over here. तो ये एक छोटा सा न्यूज है कि हम लोग का फाइनल क्वार्टर में वी हैव बीन राइस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 84% है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 38.5%, लार्जेस्ट परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. ओके. एंड यहाँ पे विथ द आईटी और बीपीओ वहां पे 21.7% है, हेल्थ सेक्टर में 12 आईटी और बीपीओ में वी कैन सी अबाउट 12%, एजुकेशन सेक्टर में 21.7% है एंड हेल्थ सेक्टर में 10.6% है. सो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर वर्किंग पीपल associated with jobs, तो यहाँ पे हम लोग का अभी jobs creation हो रहा है, which is directly killing the unemployment scenario in our country, that is in the final quarter. तो ये एक छोटा सा न्यूज है about the rise in jobs. Okay. So Nilgiri brew robin, यहाँ पे क्या बोला गया है about a species which is directly in an endangered category. तो ये कहाँ पे मिलता है ज्यादा? वेस्टर्न घाट्स में, which is also a biosphere reserve of us. So this नीलगिरी ब्रू रॉबिन, इसका बहुत सारा नाम है. इनको बोलते हैं नीलगिरी शॉर्ट विंग ऑल्सो, इनका पंख बहुत छोटा है. व्हाइट बैलेड शॉर्ट विंग बोलते हैं इनको ऑल्सो, नीलगिरी शोलाकिली बोलते हैं और रीफस बैलेड शॉर्ट विंग बोलते हैं. सो दिस स्पीसीज कैन बी फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट, SHOLA, शोला फॉरेस्ट, that is of the higher hills of southern India, and you can find this mainly north of the Palaghat range. Okay, Palaghat range बहुत एक important and famous range है, and this species is directly under the endangered category. ठीक है. So this species today we could see that
This chat-like bird is long-legged and appears chunky with its short tail and wing. And once believed to be common in the Nilgiris, little is known about the current population trends of the shy inhabitant. ये बहुत shy है, okay? Open नहीं है, थोड़ा introvert type का bird है, ठीक है? So the species prefer to live only in highly threatened habitats and near streams. And Sholakili seems to be highly restricted to only solar forest habitats, making it more susceptible to change in its environment. So अगर हम लोग इनके environment देखें, so this species had been found to occur around 1200-meter altitude ranges in the higher hill ranges of the Western Ghats. And यहाँ पे बोला क्या गया है कि the behavior of this bird, मैंने जो बोला introvert type के हैं, ठीक है? So ये this bird frequently does not interacts with various other organisms in the nature. So therefore अभी ये जो bird है, it is totally in this endangered category. So today you can see that tomorrow this bird may directly fall under the critically endangered category. So therefore we need to save this species, which is a very beautiful bird, which is a growing concern of the people of the forest lovers who is directly in this Western Ghats, so as to protect this shy inhabitant. ठीक है, तो सिंस ये नीलगिरी ब्लू रॉबिन बहुत ज्यादा न्यूज में है because the disappearing of tendency of this bird because of the change in the climates, change in the habitats of this bird. So यहाँ पे ये जो bird है कहाँ मिलता है, क्या उसका IUCN स्टेटस है, तो ये सब थोड़ा मेजर चीज हो जाता है, ठीक है? और कहाँ पे इसको मिलता है ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंस, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स, हायर हिल रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो सब देख लेना, ठीक है? लास्टली सेइंग अबाउट एन एडिटोरियल अबाउट एन इमर्जिंग इंडिया नेपाल टाइज. तो जब हम लोग इंडिया नेपाल के बारे में बोलते हैं, सो सी व्हेन वी टर्म विथ नेपाल एज अ कंट्री, नेपाल के साथ हम लोग का हिस्ट्रिकल टाइज भी है, ओके? Nepal is an important neighbor of India and it occupies a special significance in its foreign policy because of its geographical, historical, cultural, economical linkage that span centuries. Also, India and Nepal share similar ties in terms of Hinduism and Buddhism also. With Buddha's birthplace Lumbini located in present-day Nepal. And these two countries not only share an open border and unhindered movement of people, but they also have some of the close bonds through marriages and family ties, पॉपुलरली नोन एज रोटी बेटी का रिश्ता. तो ये एक बहुत फेमस टर्म है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, रोटी बेटी का रिश्ता. So because of that, the India-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950 forms the bedrock of the special relations that exist between India and Nepal. So rivers originating in Nepal even say about perennial river system of the India in terms of ecology and hydropower system. तो इसीलिए अभी ये जो हम लोग का नया engaging ties है, today it mainly focus on the hydroelectric power system between India and Nepal. तो ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में ही काम करते हैं. Bilateral relations includes trade and economy because we know India is Nepal's largest trading partner. Connectivity because Nepal is directly a landlocked country. Today, if we see Nepal wants to trade with European countries, USA, and many other countries, they need an access to the open seas through the country of India only. Defense cooperations भी है हम लोग के साथ. The Gorkha regiment of the Indian Army are raised partly by recruitment from the hill districts of Nepal. Also, we do some of the military exercises, such as the Surya Kiran. उसके बाद cultural engagements भी है, because India has signed 3 sister city agreements for twinning of Kathmandu, Varanasi, Lumbini, and Bodh Gaya and Janakpur, Ayodhya. तो ये सब भी है. उसके बाद हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी उनके पास हम लोग पहुंचाते हैं during the time of even some of the sensitive ecological fragile zones में आते हैं. जैसे वहां पे 2015 earthquake में अगर देख लूं, तो India was the very first country to respond to Nepal. Then we directly cooperate with various number of humanitarian multilateral partnerships, be it BBIN, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. फिर उसके बाद सार्क में हम लोग का मेंबर थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम लोग के मेंबर थे. Also, people to people interactions were very much. Thousands of Nepalis serve in the Indian Army. So we have got a range of issues, range of terms today. But in association with these terms, we have got issues also. जैसे बॉर्डर ब्लॉकेट हुआ 2015 में,
Chinese intervention बढ़ रहा है नेपाल में, because of which today Nepal and often play the China card with India. Border dispute है काला पानी को लेके, लिम्पी याधुरा लिपू लेक को लेके. Then we can see, because of the open border, the influx of illegal migrants, counterfeit currencies, drugs and human trafficking are very much of rampant. तो issues भी है, लेकिन इस issues को हम लोग को solve करना पड़ेगा. Because today we know about the power projects. If I see about the hydropower projects, 5 agreements sign किया गया था recently between India and Nepal. अगर मैं बोलूं सतलुज जल विद्युत निगम, Nepal Electricity Authority, for development of a 490.2 megawatts Arun 4 hydropower project. Also, India and Nepal went on for the project which is known as the West Seti project. ओके, वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट. तो ये वेस्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, इसको अपलिफ्ट करके ही हम लोग ने क्या कर दिया था, इसको अपलिफ्ट करके, इसको अपग्रेड करके, टुडे वी डायरेक्टली वेंट ऑन फॉर द सेटी रिवर प्रोजेक्ट्स व्हिच इज नोन एज द SR6 प्रोजेक्ट्स. तो दिस प्रोजेक्ट which was proposed of a 750 megawatt hydro project which is to be built on the Seti river in far western Nepal. तो यहाँ पे है Seti river. It is around this area, far western Nepal. So here largely the government has remodeled this project to go for the West Seti and the Seti river which is SR6. तो पहले हम लोग का 750 मेगावाट हाइड्रो पावर का हम लोग का एम था, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ने बढ़ा के इसको 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम दे दिया गया है. So this storage of reservoir will fill up during the monsoon season and water will be drawn to generate power during the peak hours each day in the dry season. And it is success is very much expected to restore India's image in Nepal and give its weightage in the future consideration for hydropower projects. Because we know that this West Seti project has the potential to be a defining model of India's and Nepal relations in the future. So we know about that Nepal today is very much rich in power sources with around 6,000 rivers and an estimated potential for around 83,000 megawatt. अगर मैं बात पीछे चला जाऊं थोड़ा, तो महाकाली ट्रीटी जो साइन किया गया था 1996 में, उस टाइम में 6483 मेगावाट प्रोड्यूस करने का वो काबिल रखता था, बट इंडिया हैड स्टिल नॉट बीन एबल टू कम आउट विद अ डिटेल प्रोजेक्ट. 1996 में किया गया था महाकाली ट्रीटी. इफ आई सी अबाउट द अपर कर्नाली प्रोजेक्ट, वो भी नॉट अ हेडवे इन द रिसेंट ईयर्स, कभी आगे बढ़ा नहीं है. इवन इफ आई सी जो मैंने बोला था अरुण प्रोजेक्ट, सो दिस प्रोजेक्ट्स इन द ईस्टर्न नेपाल रीजन whose functional or whose foundation was laid down in 2018 and which was set to complete by 2023. तो उसमें हम लोग ने थोड़ा बहुत काम करके हम लोग के थोड़ा अच्छा जेस्टर निभाया है. So today we have seen that we need to go with Nepal because it's a friendlier country with us. And यहाँ पे जब उन लोग का पोटेंशियल ज्यादा है और हम लोग को जो करंट चाहिए, which is also going with some of the renewable sources of energy. आज हम लोग करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी के थ्रू से, कोल से. तो इसी के थ्रू से वी कुड डायरेक्टली सी अबाउट दैट नेपाल से अगर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो नेपाल का जो 83,000 मेगावाट का कैपेसिटी है वो हम लोग टैप कर सकते हैं. क्योंकि नेपाल जैसा छोटा देश इतना कैपेसिटी ऑब्वियसली उन लोग को नहीं चाहिए, तो वो किसको चाहिए, हम लोग को चाहिए. And Nepal has got a proximity towards the area of Northeast where the current or where electricity has not yet fed to each and every areas of Northeast. अभी भी बचा है बहुत ज्यादा areas. तो नेपाल के साथ हम लोग फिर से engage करके we could directly see that Nepal and India's relations could be very much engaged upon and also could be improved in the coming times if we directly go for an energization relations. ठीक है, तो ये था अबाउट द एनालिसिस ऑफ द इंडो नेपाल रिलेशंस. ओके, तो यहाँ पे आप लोग के लिए 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, अटेम्प्ट कर लीजिएगा वंस मेंस क्वेश्चन. तो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज अवर व्हाट्सएप चैनल विद द लिंक गिवन बिलो. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड जय हिंद.